हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन बहुत सारी हैं, बट हियर विल रिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टीज अप टू एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। तो बच्चों इस ट्रेंड में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस होता है बच्चों न्यूक्लियस से एटम के आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। बट देयर इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग कि इलेक्ट्रॉन्स कहां तक प्रेजेंट है, क्योंकि एटम में कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं होती। And moreover, it is very difficult to find the position of electron. एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम हेवी न्यूक्लियस की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट to find where the electron is present. So to get the idea of atomic radius is difficult by this way. So we use the technique where the atoms are bonded to the other atom, and by just measuring the internuclear distance we find their radius. तो बच्चों सबसे पहले what is atomic radius? It is the distance from the nucleus to the outermost shell where the electrons are present. Thus you can note down atomic radius, it is the distance from the nucleus to the outermost shell where electrons are present. बेसिकली बच्चों एलिमेंट्स को यहाँ पर बॉन्ड लेंथ नापने के लिए दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। वन इज मेटल्स एंड अदर वन इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन। ये जो क्लोरीन एलिमेंट है इसमें जो एटम बॉन्ड बनाते हैं वो शेयरिंग से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2, 8 and 7. This chlorine atom needs one electron to complete its octet. So what they do, they share one electron. So this way the two chlorine atom get bonded together. Now this pair of electron is in between these two nuclei, and this type of bond in which the two atoms are holding one another by sharing of electron is called as covalent bond. इसको बच्चों डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड द कोवेलेंट बॉन्ड इन 10th क्लास. Now these two chlorine atoms are in bonded state. By the X-ray diffraction technique we can find the position of the nuclei. तो इन दोनों एटम्स की हमने बीच में डिस्टेंस के बारे में फाइंड किया, इसकी लेंथ को पता लगाया, and just half of the internuclear distance between the two chlorine atom will be the measure of its radius, which is called as covalent radius. ये बच्चों जो डिस्टेंस है that is 250, it is nearly 198 picometer. So if we want to find out the radius, we simply divide it by 2, and thus it comes out to be 99 picometer. तो कोवेलेंट बॉन्ड बना तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो निकला दैट इज कोवेलेंट रेडियस. और बच्चों मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं दैट इज मेटालिक बॉन्ड, और अगर हम इसमें अब रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज मेटालिक रेडियस. So what actually the covalent bond is, sorry the metallic bond is, ये जैसे एक बच्चों शीट है मेटल की,
and these are the atoms, metal atoms. And we know the metals have low ionization energy. So even at room temperature, these atoms will lose electron, and thus in the metal there will be so many electrons, free electrons. They are free, they are just moving like water in the sea. And the positive charge thus left behind is called as kernels, KERNELS. और बच्चों ये जो नॉन डायरेक्शनल अट्रैक्शन है which is between electron and the surrounding kernels, and also we can say the electrons with surrounding kernels, and also this kernels also attracting the surrounding electrons. ये जो नॉन डायरेक्शनल बच्चों अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, that is holding it together, and this attraction between electron and the kernels is called as metallic bond. And if we find out the internuclear distance of the two adjacent atoms in metal, that is called as metallic distance, and half of this distance will be the metallic radius. जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल जो कॉपर है, कॉपर के अगर हम एलिमेंट्स को देखें, इसके बीच में मेटालिक बॉन्ड को देखें, तो हमने पाया इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 256 पिकोमीटर. So to get the radius of copper, just half this internuclear distance, it will give us the measure of metallic radius. So now you can note down the definition of covalent and metallic radius. Covalent radius is the half of the internuclear distance between the two same atoms joined together by covalent bond. In chlorine, the internuclear distance is 198 picometer, thus its radius will be half of it, which is 99 picometer. And metallic radius is the half of the internuclear distance of the adjacent atoms connected by metallic bonds in metal. For example, in copper, the internuclear distance of the adjacent atom is 256 picometer, so half of it, which is 128 picometer, will be the radius of copper. And the next type of radius is van der Waals radius. अगर बच्चों कोई strong bond उनके बीच में ना बना हो, तो always there is the attraction which is called as weak van der Waals force that always exists. जैसे कि बच्चों क्लोरीन के जो दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, मगर इन मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन अपने नियर बाय मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड का नहीं है. When there is no force, we always say a weak force exists, which is called as weak van der Waals force. So this way, these two chlorine atoms of the adjacent molecules are held together by weak van der Waals force. बच्चों ये फोर्स वीक है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं and they exist in gaseous phase. So if we measure the distance between these two atoms of the adjacent molecule and half of it is taken, this will give us the measure of van der Waals radius. Even बच्चों जैसे noble gas atoms हैं, ये हमारे बॉन्ड नहीं बनाते because they have already filled their outermost shell. So in this case also there is weak van der Waals force between these discrete atoms, and the half of the distance between these atoms will be the measure of
वेंडर वॉल रेडियाई। और बच्चों अगर हम कंपेयर करें कोवेलेंट रेडियस को वेंडर वॉल रेडियस से, तो इट इज डिस्टिंक्टली सीन कि वेंडर वॉल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस है वो कम है। इट मीन्स while comparison we cannot compare covalent radius with the van der Waal radius, which is the half of the internuclear distance, because van der Waal radius is bigger. Why it is bigger? Because this force is weak and the atoms are quite far apart. van der Waal force बच्चों वीक होती है, जिसकी वजह से एटम दूर दूर होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, and thus the two atoms are close together. One more reason for covalent radius to be smaller is there is some common overlapping portion, and this way the atoms have come more close together, which will further reduce the calculation of atomic radius. And this way we can say covalent radius will always be smaller than van der Waal radius. और बच्चों जब हम while we will be discussing the change of size in period or group, we will consider only one kind of radius. We will not add the covalent radius with the noble gas radius, क्योंकि noble gas atom में जो radius होगा वो क्या है, that is van der Waal radius. तो covalent bond में covalent bond को ही हम consider करेंगे. Now students, you can note down what is van der Waal radius. It is the half of the distance of two nucleus of the adjacent atoms connected by van der Waal force. For example, the noble gas atoms which are connected by van der Waal force, and the atoms of chlorine of the adjacent molecule. Always covalent radius is smaller than van der Waal radius. And what was the reason? First, the covalent bond is strong. It will take the molecules more closer. And secondly, it has some common overlapping portion. जबकि बच्चों van der Waal force में always the atoms are far apart. They don't have any common portion. Now, we will discuss variation of size in periodic table. जो एटम का साइज होता है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. अगर बच्चों हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट केस में न्यूक्लियर चार्ज कम है और सेकेंड केस में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. इवन इफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन will be pulled more strongly in the case where the atom has greater nuclear charge. It will shrink the valence shell, valence electron, and thus the atomic size of the atom will reduce. So, greater the nuclear charge, smaller will be the atom. Greater the nuclear charge, smaller will be the atom. Now, the second factor is the number of shells. जैसे कई एटम हैं जिनके अंदर बच्चों वैलेंस शेल 1 है, किसी में वैलेंस शेल 2 है, किसी में 3 है, and so on. If the number of shell increases, the next higher shell will be farther from the nucleus. यहाँ 2 शेल हैं, इसमें बच्चों न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है. Similarly, if the atom has 3 shell, the third shell will be again farther from the nucleus. So, greater the number of shells, bigger will be the atom. So, we can write greater the number of shell, bigger will be the atom. Will be the atom. Now the overall comparison of size,
will depend on their combined impact, which is dominating. When we move across the period, the electrons gets added in the same shell. जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर हम सेकेंड पीरियड में पढ़ रहे हैं तो सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे. इट मीन्स अक्रॉस द पीरियड all the atoms will have the same number of shell, but in each successive step there will be addition of one proton and one electron. It means there will be increase of nuclear charge in each successive step, and thus the valence electron will be attracted more strongly, and this will result in shrinking of the shell, and thus atomic size decreases left to right. So now you can note down, because electrons are being added in the same shell, but due to increase in nuclear charge the shell shrinks and thus the atomic size decreases. Now students, down the group atomic size increases as in each step there is addition of a new shell, and the new shell is farther. Yes, there is also increase in nuclear charge which shrinks the shell, but the effect of increase of nuclear charge is less. The effect of addition of new shell is more. Hence in overall, down the group atomic size increases. Now students, you can write effect of addition of new shell is more than the effect of increase of nuclear charge. Thus in overall, atomic size increases down the group. Thank you बच्चों.